हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर जो है हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज which protocol out of the following is used to send and receive emails over a computer network? So here the correct answer is SMTP, and the full form of SMTP is Simple Mail Transfer Protocol. Now the second question is which of the following option is the correct unit of measurement for network bandwidth? So हम नेटवर्क बैंडविड्थ मेजर करने के लिए जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दैट इज HZ। इसके अंदर जो है हम मेजर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डैश is a set of rules that need to be followed by the communicating parties in order to have a successful and reliable data communication over a network. तो हम जब भी communication कर रहे हैं over the network, the rules and regulation that we follow is called protocols. तो correct answer here is protocols. Now next is L in HTML stands for, the full form of HTML is Hypertext Markup Language. So here L stands for language. Next is Ethernet card is also known as, हम Ethernet card को हम कहते हैं Network Interface Card. So full form, here the correct option is C, that is NIC. Next is the full form of WWW. Full form of WWW is World Wide Web. These are the one marker question which has been asked in previous year question 2023 to 2024 and compartment paper 2024. अगर हम सैंपल पेपर की बात करें, so if we talk about the sample paper issued by the CBSE for this year, तो यहाँ पे जो है वन मार्कर के क्वेश्चंस जो है हमारे 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके वन मार्कर के इस बार आएंगे इस ईयर के पेपर में, and that will be question number 17, 18 and 19. So in 17 question, which protocol is used to transfer files over the internet? So we use FTP protocol. The full form of FTP is File Transfer Protocol. Now, in the 18th question, which network device is used to connect two network that use different protocols? So, अगर हम different protocol, different networks को जब हम connect करते हैं, तो उसमें कौन सा networking device use करते हैं? That is gateway. Now, the 19th one is which switching technique breaks data into smaller packets for transmission, allowing multiple packets to share the same network resources. So, हमारे पास जो है switching के दो है, circuit and packet switching. So, इसका यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? पैकेट स्विचिंग, राइट? सो अगर आपने देखा होगा वन मार्कर के क्वेश्चंस में जो है ज्यादातर हमारा प्रोटोकॉल्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रोटोकॉल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे जितने भी प्रोटोकॉल्स है आप उनको सबको अच्छे से, तो आप जो जितने भी प्रोटोकॉल्स है सारे प्लीज अच्छे से जो है गो थ्रू करके जाइएगा, राइट? लेट्स डिस्कस 2 मार्कर क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम। सो यहाँ पे जो है आपका 2024 कंपार्टमेंट में क्वेश्चन नंबर 19 2 मार्क्स का पूछा गया है, जहाँ पे एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म्स। आपको जो है यहाँ पे इनको फुल फॉर्म बताना है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, राइट? नाउ गिव वन डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड FTP। तो अगर हम वन डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो HTTP इज यूज फॉर एक्सेसिंग वेब पेजेस, राइट? सो जो भी प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं टू एक्सेस द वेब पेजेस इज कॉल्ड योर HTTP प्रोटोकॉल, and FTP is your file transfer protocol. File transfer protocol, that means the protocol which is used to transfer the files over the इंटरनेट, राइट? सो आप देखो कि अगेन यहाँ पे जो है प्रोटोकॉल का ही रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नाउ इन बी पार्ट, डिफाइन द टर्म आईपी एड्रेस विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क। तो अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस इज द यूनिक एड्रेस ऑफ ईच डिवाइस ओवर द इंटरनेट, राइट? ओवर द नेटवर्क हम जो भी सारे कंप्यूटर का वी हैव, so every computer is having a unique address over the internet, and that is called your IP address, or we can say internet protocol address, right?
नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राउटर। अगेन क्वेश्चन आपका किस में से पूछा गया है, नेटवर्किंग डिवाइसेस। सो नेटवर्किंग डिवाइसेस, प्रोटोकॉल एंड स्विचिंग, ये आपके तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके क्वेश्चन 1 मार्कर और 2 मार्कर्स में पूछे जाते हैं, राइट। यहाँ पे what is the main purpose of router? So the main purpose of router is to find the best possible route available to send the network between the sender and the receiver. So जो भी best possible route होता है वो कौन find out करता है, राउटर करता है। नाउ दिस इज द 5 मार्कर क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन जो है समहाउ इसके फर्स्ट 3 पार्ट जो है आपके एज इट इज आंसर्स आपको लिखने होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है that where the server will be installed in the network. So server will always be installed at the place where the maximum number of computers are installed, right? Second important and short question is to create the layout of the नेटवर्क। जब हम केबल लेआउट बना रहे हैं तो यू नीड टू टेक केयर आइदर वी कैन क्रिएट अ बस टोपोलॉजी और अ स्टार टोपोलॉजी। इन दोनों टोपोलॉजी के अलावा कोई और टोपोलॉजी फॉर्म आपकी नहीं होगी, राइट। इसमें भी हम दो वी हैव टू वेज टू क्रिएट योर केबल लेआउट, आइदर बाय कनेक्टिंग ऑल द प्लेसेस विद द सर्वर, राइट। तो जिस भी बिल्डिंग में या जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सर्वर है, रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग और रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर एंड क्रिएट योर स्टार टोपोलॉजी। और अनदर वे इज टू फाइंड आउट द मिनिमम पॉसिबल distance between the two buildings. So whichever buildings are having the minimum possible distance, connect those building together and रिमेंबर कि आपका क्लोज लूप नहीं बनेगा, दैट इज रिंग टोपोलॉजी फॉर्म नहीं होगी। सो दिस इज अ सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन विच इज ऑलवेज आस्क्ड। देन थर्ड इज वेयर द हब एंड स्विच विल बी इंस्टॉल्ड। सो if we have more than one computer in any of the department or in any of the building, then we require having switch to connect all the computers together to form a network. So जहाँ पे भी आपके जिस building में भी, so usually in all the departments or in all the buildings we have more than one computer. So in every department or in every building we require hub and switch to connect all the computers together, right? देन एक कई बार आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है व्हाई रिपीटर इज रिक्वायर्ड और वेयर रिपीटर विल बी रिक्वायर्ड। सो वेर एवर यू आर फॉर्मिंग अ केबल लेआउट, द केबल लेआउट दैट यू हैव formed, right? So wherever you have formed a cable layout, if the distance is above 70 meters, there you are supposed to install the repeater between those buildings, right? सो ये आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा 1 और 2 मार्कर का क्वेश्चन जो है आपके आइदर वायर कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन में से पूछ लिया जाता है या फिर कोई भी आपके प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो लेट्स डिस्कस दिस वन। एंड इन अंबाला ऑफिस वी हैव 3 blocks, वन इज HR ब्लॉक, second is accounts block and third is logistics block. The distance between each block is already specified that HR in account is 400 meters, accounting logistic is 200 meter, logistic in HR is 150 meter, whereas Ambala and head office is 220 kilometers away. HR block is having 70 computers, account block is having 40 computers, and logistic block is having 30 computers, right? Count blocks is having 40 computers, whereas HR block is having 70 computer. So सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, where we install the server. So maximum number of computer is in HR block. So HR block, so server will be installed in your HR block.
So suggest the most appropriate location to house a server. So which one is? HR block is the most appropriate location to host the server. Reason, you need to write down the reason because it contains a maximum number of computers, right? Now next is suggest the in the second part, suggest the best wired medium to efficiently connect various blocks within the Ambala office compound. तो अगर वायर्ड मीडियम की बात करते हैं तो हमारे पास तीन वायर्ड मीडियम है. वन इज इथरनेट, अनदर इज क्वेस्टिक, वन इज क्वेस्टिक पेयर, अनदर इज कोएक्सियल केबल एंड थर्ड इज योर ऑप्टिकल फाइबर. जब हम एफिशिएंटली कनेक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन स्पीड वी रिक्वायर, we the fastest speed, we require the fast speed between the devices. So here optical fiber will be the correct answer. Now it is asked to draw an ideal cable layout for connecting these blocks for the wired connectivity. अब यहाँ पे जो है हमारा क्लोज लूप बन रहा है, तो मैंने आपको बोला था कि हम क्लोज लूप नहीं बनाते हैं. ठीक है, we can make the cable layout in two ways, either by choosing the least distance between the blocks. So HR एंड लॉजिस्टिक एंड अकाउंट्स के बीच में लीज डिस्टेंस है, तो हम इसको रिमूव करके जो है बस टोपोलॉजी फॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बस टोपोलॉजी बन गया, HR टू लॉजिस्टिक एंड लॉजिस्टिक टू अकाउंट्स. ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम सर्वर से जो है दोनों ब्लॉक को कनेक्ट कर सकते हैं. सो अगर हम जो है सर्वर से दोनों ब्लॉक को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो उस केस में जो है हम HR लॉजिस्टिक को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और अकाउंट्स और HR को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. सो बोथ आर द करेक्ट लेआउट. सो आप जो है दोनों को यूज कर सकते हैं, बट वी ऑलवेज प्रेफर द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस वन. सो बस टोपोलॉजी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर. The company wants to schedule an online conference between the manager of Delhi and the Ambala offices. Which protocol? Again, question is from protocol. Which protocol will be used for effective voice communication over the internet? तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही आंसर गिवन है कि आपको वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, दैट इज VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वी यूज, राइट. सो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने आंसर हमें दे दिया है. Now fifth, which kind of network will be between Delhi office and Ambala office? Now the distance between the Delhi office and Ambala office is 220 kilometers. So यहाँ पे हम जो है कौन सा हमारा कनेक्शन फॉर्म होगा, हम एक स्टेट से जो है दूसरे स्टेट में जा रहे हैं. सो WAN नेटवर्क विल बी देयर. Now, just let's discuss. Now, let's proceed to year 2024. When we are talking about question number 19, we it is again asked to expand the term. So, full form of XML is Extensible Markup Language, and PPP is point-to-point protocol. Second is give one difference between circuit switching and packet switching. Again, switching से question है. In circuit switching, there is a dedicated link between the sender and the receiver, and message travels with the and message travels from this dedicated link between the sender and the receiver. Whereas in packet switching, data is divided into small packets, or we can say small chunk of packets, and there is no direct connection between the sender and receiver. Packets can take any route between the network to reach to the receiver, to reach to the destination, and over the destination they reassemble themselves to make a complete message again, right. Now B part, define the term web hosting. So web hosting is basically the mechanism where the user can where the user can upload their website over the server to publish their website and make it available over the internet to make it accessible worldwide web, right. Second part, name any two web browsers. So we have many web browser like Safari, Yahoo, Google Chrome. We have right. Now again 5 marker question which is very important, which we have already discussed in the previous question. So here we have Bangalore office and Chennai division. The distance between Vajra and Trishula is 350 meter. Right.
Trishula to Sudarshan is 415 meter. Sudarshan to Vajra is 300, and Bengaluru to Chennai is 2000 kilometer. Whereas the number of computer on Vajra is 120. Sudarshan 75, Trishula 65, and Bangalore office 250. Now the question is asked, suggest the cable layout to efficiently connect various locations in Chennai division. So when we are talking about Chennai division, first we need to check which block is having the maximum number of computer, that is the Vajra block. So in Chennai division, your server will be placed on Vajra block because it has the maximum number of, because it contains a maximum number of computer. So we can create the layout either in two ways by connecting both the, here the least distance is by connecting your both the block with the Vajra, which is the server house. So your correct layout is Sudarshan to Vajra, Vajra to Trishula, and it is contains the least possible distance. Which block in Chennai division should host the server, that we have already discussed, that is Vajra, because it contains a maximum number of computer. Which fasting effective wired medium should be used to connect the prime office at Bangalore with the Chennai division? Now, the fasting effective is asked where wired medium. So, obviously, fasting effective is your optical fiber. Now, which network device will be used to connect the digital devices within each location of Chennai division? So, which we require to connect all the digital device together? That is either hub or switch. So, fourth का correct answer hub और switch दोनों ही हो सकते हैं. तो हम slash करके दोनों आंसर लिख सकते हैं. A considerable amount of data loss is noticed between different locations of Chennai division, which are connected in the network. Suggest a networking device that should be installed to refresh data and reduce the data loss during transmission through and from the different locations. So, what we require to protect the data loss is to place a repeater between Vajra and Trishula and to place a repeater between Vajra and Sudarshan. I hope ये आपको समझ में आ गए होगा क्वेश्चन पांचों के पांचों. What is the differentiate between wired and the wireless transmission? Talking about the wired transmission, that means a cable layout is used to connect all the computers together, and data is transferred over the cable to from one computer to another computer. Whereas in wireless transmission, no cable layout is used. The data is transferred with either with the data is transferred with the air medium, either by using the waves, either by using the radio waves and or satellite. Differentiate between URL and domain name with the help of an example. URL, full form of URL is Uniform Resource Locator. So when we are talking about URL is basically the complete address of any website is URL, and domain name is the name of the organization, and the in the top level domain which we have used. When we are talking about when we are talking about URL, then then the example is which starts with HTTP, then www, then slash, then www dot http, then slash, then w w dot, suppose CBSE Academy,
CBSE academic dot nic dot in, then suppose contact us HTML page we have opened. So, so this is your complete URL, right? HTML. So this is your complete URL. When we are talking about the domain is www.cbseacademy.nic. So name of the organization and the top domain level, that is nic.in. So this is your domain name. Now what is the full form of the following? HTML is hypertext markup language. TCP is your transmission control protocol. What is the meaning of protocols? Protocols are the rules and regulations that we need to follow while doing the communication over the internet, right? Now again the 5 marker question suggests the most suitable place to install the server for the Delhi branch. So when we are talking about the Delhi branch, that means which branch is having the maximum number of computer? Branch D. So server will be placed at branch D. Suggest an ideal layout for connecting all these branches within the Delhi. So we have now the distance between the server is placed here, right? So either we can connect all the branches in the form like we can connect all the branches with the branch D. So the distance between C and D is 15 meter. A and D is 65 meter. A and D is 65 meter. And B and D is 35 meter. So we can create the star topology by connecting all the computers with the branch where the server is installed. This is the one way, or we can choose the least possible distance between all the branches. So C and D के बीच में सबसे कम distance है, then B और C के बीच में सबसे कम distance है, तो we can create connect B and C, which is the distance between B and C is 30 meters. And then we can connect B and A together with the distance between B and A is 40 meter. So we can create the bus topology by connecting A to B, B to C and C to D. So I suppose दोनों टोपोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी, दोनों ही करेक्ट आपके टोपोलॉजी और आइगन लेआउट है. इसमें अगर आप जो है लेआउट बना रहे हैं विदाउट स्पेसिफाइंग द टोपोलॉजी और विद स्पेसिफाइंग द टोपोलॉजी यू विल गेट 1 मार्क्स. अगर सिर्फ और सिर्फ आप टोपोलॉजी का नाम लिख रहे हो और आपको लेआउट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा, तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेगा. ओके. Which device will you suggest that should be placed in each of these branches to efficiently connect all the computers within these branches? So सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने के लिए which we device we require? That is hub or switch. Now, Delhi firm is planning to connect its marketing department in Kanpur, which is approximately 300 kilometer away. Which type of network or out of land when or man will be forced? So, when will be forced? Now, suggest a protocol that should be needed to provide help for transferring of files. Again, protocol में से क्वेश्चन है जहाँ पे हम फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं. So, FTP protocol will be यूज. सो ये आपके जो 2024 एंड 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. लेट्स डिस्कस sample paper which is issued by the CBSE for this year. So 1 मार्कर के 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 में आएगा. देन क्वेश्चन नंबर
After the 2 marker question will be a question number 28. List one advantage or one disadvantage of star topology. So talking about the one advantage, if any of the computer will stop working, then the rest of the network will not be affected and it keep on working. And disadvantage is if the central hub of the star topology, the central computer of the star topology will stop working, then the entire network will be failed. Right? Now the B part explains, so you will get the choice, either you need to write down the answer for A or B. Explain the term SMTP, so 1 marks for expanding the term. तो आपको सारे फुल फॉर्म्स भी याद करने हैं क्योंकि 1 मार्क का जो है फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आएगा. सो प्रोटोकॉल्स हो गए, देन योर नेटवर्किंग डिवाइसेस, पैकेट स्विचिंग, टोपोलॉजी एंड फुल फॉर्म्स. देन योर वाई अगेन वायरलेस मीडियम, राइट. सो यहाँ पे हम फुल फॉर्म की बात करें, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द मेल ओवर द इंटरनेट, राइट. सो 2 मार्क का क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के आपके 1 मार्क का क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. एंड देन यू विल बी हैविंग द लास्ट क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ 5 मार्क्स, जो अगेन सेम वही होगा जो अभी तक हमने डिस्कस किया है. तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर इन द मुंबई ब्रांच विल बी, एडमिन में वी हैव 20 कंप्यूटर्स, देन एडमिन में वी हैव 30 कंप्यूटर्स, फूड में वी हैव 18, मीडिया में वी हैव 25 एंड डेकोरेटर में वी हैव 20. So maximum number of computer is in admin block. So at the server will be installed like the admin block because it contains the maximum number of computer. So first answer is fulfilled. Then which hardware device will you suggest to connect all the computers within each building? So हम ये भी discuss कर चुके, that is hub or switch. Draw the cable layout to efficiently connect various buildings together. And which cable would you suggest for the most efficient data transfer? When we are talking about the most efficient, then optical fiber cable will be used. And the cable layout will be, either we connect all the computer directly with the admin and create the star topology. So अगर हम बात करें admin और food के बीच में distance 42 meters का है, एडमिन एंड मीडिया के बीच में डिस्टेंस 96 मीटर का है, एंड एडमिन एंड डेकोरेशन के बीच में डिस्टेंस 48 मीटर का है. सो हम यहाँ पे इस तरह से स्टार टोपोलॉजी भी क्रिएट कर सकते हैं. अगर हम मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस में हम चेक करें तो यहाँ पे हमारा जो है सबसे कम डिस्टेंस किसके बीच में है, एडमिन एंड फूड एंड मीडिया एंड डेकोरेटर्स, राइट. एंड मीडिया एंड डेकोरेटर्स के बीच में जो है आपका कितना, आइदर वी कैन कनेक्ट मीडिया और फूड और वी कैन कनेक्ट फूड और डेकोरेटर्स. सो अगर हम फूड और डेकोरेटर्स को कनेक्ट करते हैं तो 46 आपका हो गया, राइट. अगर हम मीडिया एंड फूड को करते हैं तो 58 हो सकता है. तो यहाँ पे हम दोनों ही यूज कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. तो ये हमारा बस टोपोलॉजी फॉर्म हो जाएगा. सो दोनों ही हमारे करेक्ट वे हैं. Is there any requirement of a repeater in a given cable layout? Why or why not? अगर हम जो है सपोज अगर हम स्टार टोपोलॉजी वाला केबल लेआउट यूज करते हैं, राइट, दैट वी कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद द सर्वर. सो हमारा लेआउट जो होगा, एडमिन एंड डेकोरेटर के बीच में वी हैव डिस्टेंस 48 मीटर, एडमिन एंड मीडिया के बीच में डिस्टेंस इज 96, एंड एडमिन एंड फूड के बीच में डिस्टेंस इज 42. सो अगर हम ये लेआउट कंसिडर करके चल रहे हैं, अगर आप अपने आंसर के अंदर ये लेआउट अगर आप स्पेसिफाई करते हो तो यहाँ पे जो रिपीटर इंस्टॉल होगा वो एडमिन एंड मीडिया के बीच में इंस्टॉल होगा बिकॉज डिस्टेंस इज मोर देन 70 मीटर. लेकिन अगर हम जो है लीस्ट पॉसिबल वाले डिस्टेंस की बात करें जहां पे हम जो है कनेक्शन ले रहे थे एडमिन से फूड, मीडिया से डेकोरेटर एंड मीडिया से डेकोरेटर के बीच में भी डिस्टेंस कितना था, 42 मीटर का, और बस एंड मीडिया के बीच में डिस्टेंस था 58 मीटर का. सो यहाँ पे हम बस टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं तो इसमें से कोई भी
कनेक्शन जो है उनका डिस्टेंस जो है 70 मीटर से ज्यादा नहीं है। सो अगर आप बस लेआउट बना रहे हैं, बस टोपोलॉजी फॉर्म कर रहे हैं इन दिस वे, सो रिपीटर विल नॉट बी इंस्टॉल इन एनी ऑफ द इन बिटवीन एनी ऑफ द ब्लॉक बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स आर नॉट अबव 70 मीटर। Now, the last part is what would be your recommendation for enabling live visual communication between the admin office and the daily head office? So, जब हम visual communication की बात करते हैं तो क्या हो, हमारा आंसर क्या होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसमें चॉइस आपको दे रखा है दैट व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी सेटअप अमंग द कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन द मुंबई कैंपस। जब हम एक ही कैंपस के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो वो हमारा कनेक्शन कौन सा होता है? लैन नेटवर्क। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? लेट। सो आई होप कि आपको इस ईयर के सैम्पल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी समझ में आ गया होगा, और लास्ट 2 ईयर के पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर नेटवर्किंग यूनिट में से आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट मी इन द कमिंग सेक्शन, आई विल रिवर्ट यू बैक। थैंक यू सो मच।